So good evening all. We are going to configure today the materials management, that is sourcing and procurement part, as well as financial accounting part. Okay, तो हम आज जो करने जा रहे हैं वो एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है वो हम पर सोर्सिंग एंड प्रोक्यूरमेंट का भी करेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी सेटिंग्स हमको लगने वाले हैं वो भी हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे है, कैसे करना है वो दिखा दिखा के, तो आप बाद में वो वीडियो देख के कर सकते हो, राइट। सो फर्स्ट जो भी है हमको कंपनी बनाना पड़ेगा OX15 मान लो। मैं अभी यहाँ पे आपको एक कंपनी कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ। OX15 तो इसमें हम कंपनी कर सकते हैं, नया कंपनी हम बना सकते हैं। तो इसमें आप डायरेक्टली न्यू एंट्रीज कीजिए। यस, तो यहाँ पे मैं TG1500 यानी टाटा ग्रुप इसको कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। टाटा ग्रुप ये मेरा कंपनी है, यानी ये फादर कंपनी है, राइट। स्टेट इज झारखंड रोड, राइट। PO बॉक्स 411046 411046। सिटी इज पुणे, कंट्री इज IN, लैंग्वेज की इंग्लिश, करेंसी INR, राइट। तो इसको मैं पहले कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो इसको सेव करेंगे। तो ये कस्टमाइज रिक्वेस्ट में आपको ये डालना पड़ेगा TG1500 CO00 कंपनी क्रिएशन, राइट। सो एक आपको रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका बन चुका है, राइट। तो उसके बाद आप कंपनी कोड बनाएंगे OX02, राइट। तो इसमें न्यू एंट्रीज कंपनी कोड, वी कैन यूज द ट्रांजेक्शन कोड एज वेल एज द पाथ, राइट। सो बोथ वे यू कैन यूज 1501। so from where I'm taking this, I will show you the implementation project so that you can get the clear understanding. Just give me 1 minute. तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ ये, राइट। तो ये प्रोजेक्ट भी हमको देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी देख के कर सकते हो। ये TG1500 इज अ टाटा ग्रुप, राइट। सो वी हैव द कंपनी कोड 1501 टाटा मोटर्स लिमिटेड, तो हम इसको ही यूज करेंगे, राइट। मैं आपको ये सब कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ, राइट। अभी 01 शायद है, राइट, तो वो सेम एंट्री नहीं लेगा, right, it is already present, so I have to take different one. So I will take the company code 1502, right. Tata Motors Limited, right. City will be Pune, India. Then currency is INR. Yes, then the language is EN. So save this. You will get one pop-up box in that you have to maintain this data again. Tata Motors Limited. Term I will take, this is a search term, it is a shortcut to search this one, region 13, right. So again you have to create one request 1502 Tata Motors company code config, right. So you created the company code as well,
Then after this, you have to create. First, we will configure this one, this FI as well as the configuration, right? So after this company code, we have the business area, right? So B510, B502 is the another business area. So we will configure this now, right? So for this, we have OX0 T code. Okay, that is a business area. So click on new entries, take one business area, B501. That is a Gurgaon, right? Gurgaon. And B502 is Jamshedpur. Jamshedpur, right? So click on save. Again, one B501, comma B502 business area, right? After this, hit on save, and then we have to configure the functional area, right? The functional area, for functional area, we have SPROT code. Then we will click on the reference IMG, then enterprise structure definition, right? So are you getting this? We are configuring the financial accounting enterprise structures, right? So we defined the company, we defined the company code, then we have already defined the business area. So we are going to define the functional area here. So execute it and click on new entries. So I'm taking here R and D, research and development. Research and development, as well as I will take here manufacturing. Manufacturing. Okay. So click on save. So this is a functional area. Functional area data notice. Okay, so we configured it. So after this, we have to configure the credit control area. So execute it. New entries. So credit control area, you have to configure it. So I will take 1502 is the credit control area. Currency is the INR, right? And click on save. 1502 is credit. बेसिकली आकाश, ये जो सारी चीजें एक्चुअली हम जो अभी क्रिएट कर रहे हैं, ये सारे फिको वाले करते हैं ना, एफआई वाले। यस यस यस, FI कॉन्फ़िगरेशन है ओके। वो। सिर्फ अभी क्या हाँ। है, जो मैंने साइकिल आपको बताया था ना, जैसे FI फर्स्ट में हो जाएगा कॉन्फ़िगर, उसके बाद क्या हो राइट। जाएगा, हाँ उसके बाद SD, उसके बाद PP और उसके बाद MM हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, अभी आप जब आपको आपका कंपनी कोड लेना है, राइट? तो जो FI का कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी किया नहीं है हमने, राइट? तो इसके राइट। वजह से वो आपको एरर देगा, यानी वो चीजें नहीं बनेंगी। तो इसके लिए हम ये बना रहे हैं, राइट? तो ये सब कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको कुछ एरर नहीं आएगा उसमें, आप स्मूथली कर सकते हो आपके कंपनी कोड से ओके। कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हम ये कर रहे हैं अभी। बेसिकली हम, हाँ बेसिकली हमको अगर मटेरियल भी इन फ्यूचर में जैसे बनाने प्रैक्टिस भी करनी हाँ, है, तो ये सारी चीजें फिर हमको करनी पड़ेगी, राइट? यस, करना पड़ेगा आपको। ओके। लेकिन ये आपको कहीं मतलब हर जगह पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। राइट, काम नहीं है वो। सिर्फ राइट सिर्फ राइट। वी हैव टू कॉन्फ़िगर इट, बिकॉज वी हैव हम्म। टू continue the cycle, right? So that you can राइट राइट। get the clear understanding of how the system is going to configure,
राइट, इन FI एज वेल एज इन अदर मॉड्यूल्स। तो आपको समझेगा बाद में जब आप कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो आपको समझेगा कि ये क्या क्यों कर रहे हैं हम, राइट। तो पहले डिफाइन कंपनी और कंपनी कोड तो हमने किया था, राइट, फॉर प्रैक्टिस पर्पज, राइट। राइट। लेकिन कंपनी कोड जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है, राइट। उसके बाद ये जो चीजें हमने अभी कॉन्फ़िगर की, बिजनेस एरिया, बिजनेस एरिया और फंक्शनल एरिया, फंक्शनल एरिया। हाँ, ये सभी चीजें उसमें आएंगी फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में, राइट, Yes. ओके। उसके बाद हम मटेरियल मैनेजमेंट का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लेंगे, राइट। फाइनेंशियल में इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉजिस्टिक जनरल में जाएंगे और अपना प्लांट कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे प्रोजेक्ट में ये देखो, कंपनी कोड, बिजनेस एरिया हमने बना दिया, राइट, क्रेडिट कंट्रोलिंग एरिया बना दिया, फंक्शन एरिया भी बना दिया, राइट। ये सब चीजें हमने अभी बनाई, कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद क्या है, प्लांट हम देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो प्लांट, यहाँ पे गुड़गांव जमशेदपुर है, 2 प्लांट्स है, राइट। तो ये प्लांट हम बनाएंगे। उसके बाद परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो इस यहाँ तक आप करोगे ना तो भी आपका काम खत्म हो जाता है, बाद में आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो 1511 is a Gurgaon and 1512 is Jamshedpur, right? So we will configure now, right? So there is the plant, define, copy, delete, check plant, execute it. So click on define plant, right? तो उसके बाद आपको न्यू एंट्रीज करना है। न्यू एंट्रीज में 1511 is your which plant? गुड़गांव, गुड़गांव। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये टाटा ग्रुप का, एक टाटा मोटर्स का हमको ये प्रोजेक्ट मिला है, तो इस प्रोजेक्ट को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, राइट। तो सेव सेव कीजिए। यहाँ पे आपको सेम डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। कंपनी, आपकी कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड, यहाँ पे आता है वो, राइट। तो मैं थोड़ा सा स्पीड में करूंगा इसको, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, प्लांट हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो प्लांट 1511 गुड़गांव, राइट। उसके बाद सेम आपको करना है 1512, राइट। तो अगेन क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, 1512 इज योर अनदर प्लांट, राइट। जैसे हमने कल डिस्कशन किया था कि एक से ज्यादा प्लांट भी हम बना सकते हैं, राइट। तो ये जमशेदपुर का प्लांट है, जमशेदपुर। अगर आप अच्छे से उसको पढ़ोगे ना, उस डॉक्यूमेंट को, SHESH, जमशेदपुर, राइट। तो उसमें जो बस एंड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग है इसका, ये जमशेदपुर में होता है। और जो मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो इसमें हो जाएगा, अपने गुड़गांव में। तो यहाँ पे वो दिया है, आप उसको देख सकते हो, राइट। तो जस्ट डू द सेव, ऑलरेडी सेव्ड, राइट। तो ये वन, आप स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा 1511 एंड 1512, राइट। तो आप एक बार चेक कर सकते हो जाके उसमें, 1511 1522 गुड़गांव जमशेदपुर, ये कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद हमको स्टोरेज लोकेशन करना पड़ेगा, राइट। तो स्टोरेज लोकेशन में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको बैक जाके आपको लॉजिस्टिक जनरल, ये नॉर्ड को बंद करना पड़ेगा। सो ओपन द नॉर्ड मटेरियल मैनेजमेंट, उसमें क्लिक ऑन स्टोरेज, मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। तो आपको स्टोरेज लोकेशन उस प्लांट के जैसे बनाना पड़ेगा, मतलब जो प्लांट आपको लेना है, 1511 अगर आपने प्लांट ले लिया तो उसके हिसाब से आपका स्टोरेज लोकेशन बनेगा। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, I am taking S1. S1 is already available, so I will take another, I will take R1, R1 भी है, I will take Z1, no issue, हाँ। So Z1 is a raw material storage location, and I will take Z2, Z2 for finished, Z2 for finished, okay, no issue. So do the save बटन, यहाँ पे आप स्टोरेज लोकेशन का डाल सकते हो, स्टोरेज लोकेशन 1511 प्लांट, राइट। और दूसरा भी स्टोरेज लोकेशन हमको अनदर प्लांट में बनाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए अगेन क्लिक ऑन मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, change this one, click on new entries, storage location will be here. You can take same Z1, Z2,
It is taking, yes, it is taking just storage location 1512 plant, राइट। तो ये अपने स्टोरेज लोकेशन बन गई यहाँ पे। उसके बाद राइट, मेंटेन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो click on new entries, then we have the two purchasing organization. You can see in the 15, oh sorry, P015 and P016, Gurgaon and Jamshedpur. So configure like this: P015 16, PO15 PO16, PO15 PO16, Gurgaon Jamshedpur, right? So Gurgaon and यहाँ पे शेखपुर, right? Gurgaon and Jamshedpur. So hit the save. So again, purchasing organization, right? P015 comma P0, sorry 0 नहीं, वो O है, P016 PO, sorry PO15 and PO16. These two are your purchasing organizations, right? So after this, we have to configure the purchasing group also, OME4. Use the T code OME4 and just configure one purchasing group. So we have to create in 3 characters, 150. 150 is your purchasing group, right? So already I explained you about the purchasing group. So that is your purchasing group, right? For Tata Motors, right? So after this configurations, right? So we have to assign, right? Assign all the configurations to the company code so that the business will be carried out smoothly. So for that purpose, we have to click on the enterprise structure, then click on assignment, click on financial accounting, right? So open the node financial accounting and execute the assign company code to company, right? So search the company code 1502 is your company code, right? So 1502 is the company code and company is TG1500. So this is your company name, right? So do the save, right? So this is the assignment of company code to company Tata Motors, right? So after this, we have to assign company code to credit control area, right? So click on position. Company code is 1502. So your credit control area, I think 1502, same is there. Yes, credit control area. Save this again. Assignment to credit controlling area, Tata Motors. कैसे क्रेडिट कंट्रोलिंग एरिया में आप कैसे एक बार वापस बताएंगे? एक्चुअली हाँ, मेरा पावर कट हो गया, उसका समझ ही नहीं पाया। हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी ये आप असाइनमेंट में गए, असाइनमेंट में असाइन कंपनी कोड टू कंपनी ये फर्स्ट आपने किया है इससे पहले, राइट? तो उसके बाद असाइन कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया उसी में है। ओके, जैसे हमने फाइनेंशियल में ये
जहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, जैसे यहाँ पे कंपनी Yes, कोड yes, और yes. कंट्रोल वैसे ही है, सेम Got it. सेम, राइट। तो उसके बाद वी डोंट वांट टू असाइन दिस बिजनेस एरिया, ओनली वी हैव टू असाइन दीज टू थिंग्स, कंपनी कोड एंड क्रेडिट कंट्रोल एरिया, बस। तो उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद लॉजिस्टिक जनरल में असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, ये आप लोग को करना पड़ेगा। सो एग्जीक्यूट असाइन प्लांट टू कंपनी कोड। उसके बाद आपको न्यू एंट्रीज में जाना है। कंपनी कोड अपना है 1502, राइट, 02, this is your company code and you have two plants, right? 1511, right? It is your first plant, right? And we have 1512, we have another plant also, right? So for that also you have to configure this. So use the company code, it is same, and we have two plants, right? Gurgaon and Jamshedpur. So just hit save. Again, assignment of plant to company code, right? Do save and go back. So that is the thing only you have to configure in logistic general. After this, open the node material management and click execute the assign purchasing organization to company code. Then click on position. Purchasing group is 1511, right? No, 15. It is PO15, right? So PO15 and PO16. Company code is 1502, right? This one, and again company code is same, right? Right. So just hit on save. Purchasing organization to company code, right? And after this, only we have to configure the last one, assign the purchasing organization to plant. So click on execute button, open it, and then click on new entries. For purchasing organization is PO15, right? So that is a Gurgaon, and PO16. So here we have two purchasing organization and we have two plants. So this plant is for Gurgaon, right? And this plant is for Jamshedpur, right? So just right, PO15 is Gurgaon, Jamshedpur, right? Hit save. So create one new request. Purchasing organization to plant. So as of now, you completed this enterprise structure configuration for both, right? So in that, click on company code 1502. You can check the tables, right? So in 20-30 seconds, the meeting will get stopped. So join again. We will continue the session.